हेलो एंड वेलकम टू कोटक सिक्योरिटीज। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी एंड दिस इज कोटक चैट रूम, एक ऐसा शो जहां पर हम प्राइमरी मार्केट में आने वाले आईपीओज के मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात करते हैं और उनसे समझते हैं उस आईपीओ के डिटेल्स को। सो इन दिस स्पेशल एडिशन वी विल बी फोकसिंग ऑन HDB Financials अपकमिंग आईपीओ। जॉइनिंग अस टुडे इज मिस्टर जय कुमार शाह, CFO हैं इस कंपनी के। Thank you so much, Indu. Very grateful to be here. To start with, sir, could you share with us an overview of HDB Financial's upcoming IPO and what investors should look forward to? So, our company has been in existence since 2007. It's a 18-year-old journey that we've gone through. Let me give you a bit about the company as to who we are. हमारी कंपनी आज 3 मेन वर्टिकल्स में काम करती है, which is neighborhood lending बोलते हैं हम, जहाँ हमारे आजू बाजू का शॉप्स रहता है, and how we operate is essentially in the neighborhood, which is kirana wala stores, MSMEs, small stationery shops, lending to them and growing the business. Then we also have a full vehicles business, which is into commercial vehicles. You see small tempos, you small trucks, you see small construction equipment when roads are going on, etc. And you see tractors which are there. And then we are growing really well in the consumer segment. Today, when you go to a Vijay sales, you go to a Chroma, you go in and to a Maruti and you're buying a car, or you're going into a Venetian Honda and you're buying a Honda two-wheeler, or you want loans for your personal consumption and growth. हमारी कंपनी हर एक चीज जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी या एक छोटा सा बिजनेस रन करने वाला आज अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, उसमें हम मदद करते हैं in terms of growing. That's essentially what our company is. Now, across 17 years, as we've grown, we now feel today is the right time. आज हम 18 साल के हो गए, जून 2007 से लेके जून 2025 तक। ये सही मौका है हमारे लिए जाके हमारे इन्वेस्टर्स से, पब्लिक से ग्रोथ कैपिटल मांगने का कि हम आज यहाँ से अभी अगले मुकाम तक कैसे पहुंचे। सो उसी लिए हम आए हैं ग्रोथ कैपिटल लेने और यहाँ से कंपनी को और बढ़ाने के लिए। So the IPO includes an OFS of 13.51 crore shares, expected to raise around 10,000 crore rupees. And so could you please tell us who the major stakeholders participating in this OFS and what impact this will have on the company's ownership structure? Additionally, 2,500 crore rupees का fresh issue भी raise किया जा रहा है. So what are the primary objectives for utilizing these funds? गुड क्वेश्चन। दो पार्ट में आपको आंसर देता हूँ। फर्स्ट, ये 10,000 करोड़ जो है वो HDFC बैंक अपना स्टेक कम कर रही है। और वो क्यों कर रही है? आज से 3 साल पहले HDB को अपर लेयर NBFC बनाया गया था, जो RBI का एक कैटेगरी है फॉर लार्ज NBFCs, ग्रोइंग NBFCs, एंड दैट इज समथिंग RBI क्लासिफाइड। RBI ने कहा 3 साल में आप अपना लिस्टिंग कर दो। लिस्टिंग में क्या होता है, अपने पेरेंट को, अपने प्रमोटर को अपना स्टेक कम करना पड़ता है, क्योंकि फिर पब्लिक को मिल सकता है। तो उसमें आइडियली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेयर होल्डिंग पेरेंट का या प्रमोटर का 75% तक जाता है और 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होता है। उस चीज को अचीव करने के लिए HDFC बैंक 10,000 करोड़ से अपना स्टेक कम कर रही है और शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक में। इन एडिशन टू दैट, जैसे मैंने कहा, 2,500 करोड़ से हम जो पैसा लेंगे उससे हम अपना कैपिटल बूस्ट करेंगे। आज आप कोई भी धंधे में जाते हो, अपना खुद का इक्विटी रहता है और दूसरा बोरो करते हो। उस चीज को एकदम सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल एडिक्वेसी कहते हैं। आई आपका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है और आप बाहर से कितना लेते हो, वो कैपिटल बूस्ट करते हैं। आप बाहर से भी थोड़ा लेके और ग्रोथ कर सकते हो, उसको हम ग्रोथ कैपिटल कहते हैं। तो ये 2,500 करोड़ जो हम ले रहे हैं वो ग्रोथ कैपिटल के जरिए लेके हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं। सर, आपकी कंपनी मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। सो कुड यू वॉक अस थ्रू द कोर एरियाज ऑफ योर बिजनेस एंड हाउ ईच कंट्रीब्यूट्स to your overall strategy? So the way it works is from a long-term strategy. Today, the last time we took capital to grow was in 2017. It was almost 7.5, 8 years ago. From then, company has been growing on its own. And as we see more opportunity and more growth potential, as any company does today in the markets, we will actually take money from our investors and grow from here. So we believe today bolstering our capital in today's times, as I said, capital adequacy is an important thing. Bolstering our capital and growing from here onwards actually takes us, through the next
few years as we plan and move forward. So मैंने आपको बिजनेस वर्टिकल से बताया, हमारे लिए हर एक बिजनेस एब्सोल्युटली कोर है. हमारा जो एंटरप्राइज लेंडिंग बिजनेस बोलते हैं, जब नेबरहुड लेंडिंग बोलते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था 2007 में, जो आज बहुत एस्टेब्लिश्ड है. मोर देन 1000 ब्रांचेस में ऑफर होता है. हमारा जो टीम है, द पर्सन हु हेड्स इट एक्चुअली स्टार्टेड द बिजनेस इन 2007. Then we have, our asset finance business, and that comes through commercial vehicle and construction equipment, and that we started in 2011. That business again has been very established now for over 12 to 14 years, and that again is growing really well. We grow in line with the industry. It's something which is very close to India Inc. अगर आप ये सोचो हमारा भारत कैसे ग्रो कर रहा है, आज हमारे रोड्स कैसे बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, हम एब्सोल्युटली फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं एज अ कंट्री. आज सुबह अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अमित शाह ने भी कहा है, अगर कोई कंट्री इन्वेस्ट करनी जैसी है, कोई कंट्री ग्रो करने जैसी है, वो हमारी कंट्री है. आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब चलते हैं तो वहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है. फिर आप अगर कंज्यूमर फाइनेंस देखो, वी स्टार्टेड दैट इन 2016. उसमें 2 साल कोविड के आए थे बीच में, जिसमें थोड़ा स्लो डाउन था. उसके बाद हमने एब्सोल्युटली ग्रो किया है, एंड टुडे आवर बिगेस्ट ऑफरिंग दैट वी हैव टू मोस्ट partners that we work with is that we offer our products across more than 1000 cities. Today our number of branches are more than 1700 branches. We operate in more than 1000 cities in the country. Every single length and breadth of the country that we operate in, we actually service them in the same manner. आज अगर आप कोई ब्रांच में जाते हो, दरभंगा हो या देहरादून हो या मुंबई हो या कन्याकुमारी हो, कोई भी ब्रांच में आप जाओगे, आपको सर्विस वैसे ही मिलेगी. आपका फ्लो इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस सेम होगा. अगर वो लोन 10 मिनट में डिसबर्स होता है तो 10 मिनट में ही होगा. एंड दैट इज समथिंग दैट वी क्रिएटेड. Out of our total branches, more than 70% of our branches are actually in tier 4 cities, which is city number 101 and above as per census. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी पार्टनर के पास जाओ आज फाइनेंसिंग के लिए, वो आपको बोलेगा हमारे पास टॉप 100 सिटीज़ में ब्रांचेस है. जब हम किसी पार्टनर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास भारत में ब्रांचेस है. थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्रीज वेयर वी ऑपरेट फ्रॉम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that is how we are distributed in terms of the business that we do. Moving forward, sir, company multiple verticals में काम करती है. So how do you manage credit risk in these segments, and what is the profile of your typical consumer borrower? So let me start with the risk element. Very important question. Now, where do we come from? We come from the house of HDFC Bank. आज जब ये कंपनी चालू हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमारे एथिक्स, कल्चर, रिस्क परफॉर्मेंस, how we manage our risk, every single thing that we had to look at, it had to be ensured that we had that mindset, the HDFC Bank way of doing things. And that is something we've really inculcated within ourselves. This company, while it's 1,08,000 crores approximately, it is a fully professional run company. So risk management is at the heart of how we operate. Now from a product point of view, let us look at product profile कैसा होता है. आज जब हम भी किसी को मिलने जाते हैं, कुछ काम करने जाते हैं, कोई शॉप में जाते हैं, हर किसी का अपना अपना प्रोफाइल रहता है. सिमिलरली हमारे में भी बिजनेसेस में, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहे हो, या किसी को सैलरीड पर्सनल लोन दे रहे हो, या कमर्शियल व्हीकल दे रहे हो, या तो आप मोबाइल फ़ोन फाइनेंस कर रहे हो, हर किसी का एक प्रोडक्ट प्रोग्राम बनता है, हर किसी का एक प्रोफाइल होता है, और हर किसी का इंडिविजुअल क्रेडिट मैकेनिज्म्स होता है. सो दैट इज हाउ वी ऑपरेट. We have a chief risk officer who's completely independent. We have a risk department which ensures there are clear parameters on how we operate in each product. So that was the first point that I wanted to address. Your second question was around overall growth. We have a lot of opportunity today in every business in which we operate. Now, if you think about it, हमने जो कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस चालू किया था, वो रैंप अप ही हुआ है 2021-22 के से लेके. हमारा बिजनेस वो 5 साल पहले 13% था ओवरऑल पोर्टफोलियो का, आज वो 23% है. आज जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट हमको देती है, whether it be in the MSME segment where we are really embedded, or where we are largely new, be it in a two-wheeler or a four-wheeler or the consumer durable space, there's a huge amount of opportunity that we have to grow. आज हमारे लिए एक बेनिफिट है, हमारा एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं है कि हम टू व्हीलर फाइनेंसिंग वाला कंपनी हुआ या फोर व्हीलर हुआ.
हम आज एक customer centric company है जिसमें products are there as a medium to serve our customers, and that's the most critical thing. While we have a large bouquet of products and we have a large customer base, we have almost 19 million customers today, which has grown more than double in the last 3 years. So the ability to expand and grow from here is fairly good. मिस्टर शाह, पोस्ट लिस्टिंग क्या आपके एक्सपांड या फिर न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की भी प्लान्स हैं? Growth, right, and innovation is today a part and parcel of a day-to-day journey. Now, let me give you an example. Throughout our journey, as I was mentioning, we started in 2007, we launched new products. We went into 2011, we launched new products. We've gone through 2016, we've launched new products. Important philosophy ये है कि हर 2 साल में या 3 साल में कुछ नया लाओ, उसको थोड़ा टेस्ट करो, उसको थोड़ा एम्बेड करो और फिर उसको ग्रो करो. We're a very patient investor that way in terms of our products. We make sure we give it a good 2 to 3 year time for each product to come in, settle down. We also put our best people in terms of that business to make sure we give it the right amount of investment in terms of people and processes and technology to grow. So, as you see products, I'm sure you'll see as time flows through that we will come up with, you know, reasonable amount of innovation to support our growth. कंपनी की बैलेंस शीट की अगर बात करें तो टोटल एसेट्स FY22 से लेकर FY25 तक इनमें यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है. सो व्हाट हैव बीन द की ड्राइवर्स बिहाइंड दिस रोबस्ट एसेट ग्रोथ? वही रेवेन्यू की बात करें तो योर रेवेन्यू पिक्ड इन FY24, लेकिन FY25 में ये गिरा हुआ है, कम हुआ है. So could you share some insights into the reasons behind this decline and how you see revenue growth evolving going forward? इनके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रेवेन्यू तो डिप हुआ है FY25 में, बट द कंपनी पोस्टेड अ हेल्दी पैट ऑफ अराउंड 1000 crore rupees. So how has HDB Financial managed to sustain profitability amid these shifting revenue trends? So if you look at our overall business, right, जैसे मैंने आपको समझाया था, हम 1700 ब्रांचेस है, 1100 सिटीज में है. We are deeply entrenched into the country. As the country grows, we will grow more. In case if there is a slight bit of challenge that we see, we will make sure we will calibrate really well. Now, what have we done over the last, I would say, almost 17 years? Every single time we make sure as there is a growth potential, we really take on to it. Now, over the last few years, there has been clear growth in the country. The country grew by 7.5%. And in the last year, the country is now poised to grow at a 6% plus. Now, as we see that kind of growth, it is very important for us as a company to calibrate and not take overly amount of extra risk. So today what we've done in terms of our strategies is tied ourselves to the nuts and bolts of the country, the deep rooted territories where our business really exists. Now, how do we really expand? So we meet, manufacturers. We look at how is the truck sales, how is the car sales, how are the two-wheeler sales. As the country builds that up, we will see automatic growth coming in. We are not a company which generates demand. We support growth and support demand. And that is how we've really operated, I would say, almost over the last decade plus, in terms of growth. And you see that coming out as a strategy and as an output as such. मिस्टर शाह, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि टोटल बोरोइंग को अगर हम देखें तो ये भी FY22 से 25 के बीच बढ़ा है. हाउ डू यू व्यू योर करंट लेवरेज पोजीशन एंड व्हाट स्ट्रेटजीज आर इन प्लेस टू मैनेज डेट? So thank you for that question. I think from a leverage point of view, we operate at a very healthy number, very comfortable in terms of the space in which we operate. Being an HDFC Bank group company today, it also lends us the advantage, along with how we've performed, to borrow at the finest rates in the market. So from a leverage point of view, if you look at India as a whole, right, we've had number of challenges, be it across 2015-16, 2018, 2022, or 2021. In all those phases, as we've gone through and grown, right, we've not raised capital, as I mentioned. One. Second, we've never had sleepless nights in terms of not having the right money to grow our business. Even during COVID,
we didn't really ever decide on the management table that we should not lend more. We always were making sure we were finally there in terms of how we borrowed. So if you look at our borrowing pattern, we always borrow at the right position. What does that mean? Let me expand that a bit. आज जब आपको पैसा चाहिए होता है, अगर आप घर खरीदते हो और अगर आप किसी से 3 महीने का लोन लोगे, तो आपको 3-3 महीने में लोन वापस देना पड़ेगा। अगर 3 महीने में कोई आपको लोन नहीं देता है, तो आपको घर बेच देना पड़ेगा। हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर हमारा 3 साल का एसेट है, तो हम 3 साल का बोरोइंग करते हैं। अगर 2 साल का एसेट है, तो 2 साल का बोरोइंग करते हैं। एसेंशियली उसको बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। कितना रखते हो आप? हम कोई भी बकेट में, आई 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ या 4 साल हुआ, हम कोई भी बकेट में आज मिसमैच नहीं रखते। Essentially giving us the opportunity to make sure as we go through cycles, ups and downs, we have the right amount of money to fund our growth in a desired manner. Thank you so much for joining us today, Mr. Shah. Thank you so much and look forward to all your support. Thank you. And to all our audience, if you enjoyed this video, if you find it helpful, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना और इस चैनल को, कोटक सिक्योरिटीज के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. You can also follow us on all our social media platforms. Thank you for stopping by. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.